Thank you so much for stopping by and clicking on the video. Well, I'm Tanya and I welcome you all to our channel where we have committed to provide you excellence. And here in the today's session, we will see tense and voices. So let's start. So before we start, we should know thoroughly that in a sentence क्या क्या कंटेंट होते हैं. कंटेंट इन द सेंस लाइक एक सेंटेंस में यू हैव सब्जेक्ट, आपको पता है, यू हैव एक्शन हैपनिंग एंड यू हैव रिसीवर. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? आई नो दैट यू ऑल नो सब्जेक्ट, एक्शन एंड रिसीवर क्या होता है, बट स्टिल अ क्विक रिविजन. अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट, वो क्या है? सब्जेक्ट. एक्शन, द एक्शन हैपनिंग. Object, receiver of the action, the person or thing on which the action is done upon. Means subject यानी कर्ता जो काम कर रहा है, object यानी receiver जो कि उस काम को रिसीव कर रहा है या उस पे वो काम हो रहा है. Let us understand with the help of an example. Mother writes an email. Here mother is the subject, writes an action and email is the object. A lot of people assume that the last word is the object. Well, this is not so. Whenever you are confused, just ask the question on what is action done upon or on whom is the action done upon. The answer which you get is the object. I hope now you are very well clear. In a sentence you have subject, action and the object. Now you have some basic rules or the general rules to convert active into passive voice. See, in the last class आप लोगों ने समझा था basics about the active and passive. Actually में active क्या है, passive क्या है, voice क्या होता है, transitive verb क्या होता है. Here you will see some of the general rules कि कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है. वेरी सिंपल. लेट्स सी द फर्स्ट वन. एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है. मीन, लेट्स सी द एग्जांपल. सीता इनवाइटेड मीरा. दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. सीता इज द सब्जेक्ट, इनवाइटेड इज द एक्शन हैपनिंग एंड मीरा इज द ऑब्जेक्ट. Now we will convert this active into the passive voice. Meera was invited by Sita. Can you notice something? Active voice का subject passive voice का object बन चुका है and active voice का object passive voice का subject बन चुका है. This is what it is saying. Active के object को passive का subject बनाया जाता है. Active के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है. क्लियर? लेट्स सी द सेकंड वन. एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. एक्टिव के सब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. कैट्स कैच माइस. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस एक्टिव इनटू पैसिव. माइस आर कॉट बाय कैट्स. एक्टिव का सब्जेक्ट दैट इज कैट्स, वो पैसिव का क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है. आई होप यू आर गेटिंग इट. लेट्स सी द थर्ड वन. पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया बी का प्रयोग किया जाता है. मतलब लेट्स सी. इट मस्ट बी डन बाय मी. पैसिव में बने सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब बी का यूज किया जाता है. इट मस्ट बी डन बाय मी. मस्ट इज द मॉडल वर्ब. लेट्स सी द फोर्थ वन. टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. टू बी के बाद. सम मनी हैज टू बी बोरोड बाय मी. सम मनी इज द सब्जेक्ट. टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म and me is the agent. Now let's see the second
topic, that is tense and voice. But note before it, passive voice cannot be converted into perfect continuous or future continuous tense. एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है, कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कन्वर्ट एक्टिव से पैसिव में नहीं होता है. नाउ इन द टेंस द फर्स्ट वन वी हैव इज सिंपल प्रेजेंट. एक्टिव का फॉर्मेट क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड पैसिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट. सी दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू शुड कीप इन योर माइंड. वेल दिस इज द केस ऑफ एक्टिव वॉइस. This first one is the case of active voice. We will see or understand with the help of example. See the first example. In active, she calls you. She is the subject and calls is the verb ka fifth form. You is the object. So subject plus verb ka fifth form plus object. Can you see the use of the structure here in the sentence? This is how you have to do. Now we will see the passive. You are called by her. You is the subject. Are verb ka third form is called by plus agent, and this her is what? This her is the agent. Active means, as I have told you in the last class, but still active means we are focusing totally on the subject. हमारा फोकस किधर है? सब्जेक्ट पे है. और द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट या डूअर ऑफ द एक्शन कौन है यहां पे? शी है. बट इफ यू वॉन्ट टू मेक इट इन पैसिव वॉइस, यू नीड टू मेक सम चेंजेस, अ बिट चेंजेस. सो बेसिकली व्हाट इज पैसिव वॉइस? आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, वी फोकस ऑन सब्जेक्ट. A minor difference between an active or a passive is, in active voice we totally focus on the subject, and in the passive voice we totally focus on the object. Okay? But how we make passive voice? You just need to interchange, which I have already told you in the previous slide. Now let's see the second one. Active. John loves Mary. And when we will convert this in passive, Mary is loved by John. Can you see the use of the structure? This John is the subject, loves is the verb's fifth form, and Mary is the object. Now this Mary is interchanged with the subject of passive. Mary subject किसका बन गया है? passive का. Is loved by John. And now active का subject क्या बन चुका है? passive का object. Now you have the second topic, that is present continuous. You already know कि present continuous क्या होता है. Now you will learn the use of how to convert active into passive. Subject. Subject plus is MR plus verb plus ing plus object. Let's see. Monica, subject, is sing means verb and plus ing, that is singing. Object, a song. This is how it goes. You just need to memorize the structure. अगर structure याद है, then active and passive is very simple. Now see the passive conversion. A song is being sung by Monica. Song, subject, is being, verb third form sung, by plus agent, by plus Monica. Let's see the second example. Active. They are playing cricket.
is being played by them. Very clear? Are play plus ing, that is playing. Cricket is the object. Now this cricket, that is object, is transformed into subject. And this they is transformed into the agent, that is the object. Now coming on to the last topic, that is present perfect continuous. Sorry, present perfect. There is no present perfect continuous. You know that. Active. Subject plus has, have plus verb third form plus object. This is the structure of active voice. Let's see. Active. Meena has bought a car. Meena has bought a car. This Meena is the subject. Has, verb third form is bought. Object, that is a car. Now when we will convert this active into passive, subject plus has, have plus been plus verb third form plus by plus agent. A car has been bought by Meera. A car is the subject. See, again the same process is being done. A car क्या है? Object, पर passive में बन गया subject. मीना subject, पर passive में बन गया agent or the object. And bought is the verb third form. Active. You have cheated Ross. Ross has been cheated by you. You, subject, is now the agent or the object. Ross, object, is now the subject. So this is done for today, and in the next class you have the three topic is left, that is simple past, past perfect and past continuous. So in the next video we will see these three parts.